Hello students, now we are going to study our next lecture, that is on the Selaginella, also known as spike moss and club moss. So firstly we should have to know what is its systematic position. ये कौन से क्लास में है. डिवीज़न तो अगर हम बात करें तो हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो डिवीज़न हमारा क्या रह जाएगा, टेरिडोफाइटा. सब डिवीज़न लाइकोफाइटा, क्लास लिगुलोप्सिडा and also Lycopsida. Order will be Selaginales, family Selaginaceae, genus will be Selagina. So in our general characters, firstly we talk about the distribution. So in Selaginella we firstly talk about their distribution. So there are 700 species of Selaginella which are living, फाउंड अंडर डाइवर्स कंडीशन. डिफरेंट कंडीशंस में मिलेंगी. कहीं हम कह रहे हैं स्वैम्प एरियाज़ में आपको मिलेंगे, डैम्प एरियाज़ में मिल रहे हैं, कहीं हम बोल रहे हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलेंगे. तो डिफरेंट कंडीशंस होंगी. हर स्पीसीज़ का अलग एनवायरनमेंट होगा, तो आपको डिफरेंट डाइवर्स कंडीशन में ये ग्रो करते हुए मिलेंगे. दे आर कॉमनली नोन एज स्पाइक मोस एंड स्मॉल क्लब मोस. So these are other two names of the Selaginella, the spike moss and small club moss. Next is their distribution, that where they live, their habitat, damp and shady areas, forest of tropics, but some are xerophytic conditions. Some species grow in xerophytic conditions which are truly xerophytic, such as exposed on rock surfaces. Rocks are, as you know, that rocks are xerophytic conditions. So some species like Selaginella densa is the xerophytic pteridophyte. Next, Selaginella orzigana is an epiphyte that grows on the trunk in tropical rainforest. Now you should know what is epiphyte. एपीफाइट की बात करें, वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन लेते हैं. जैसे एक जनरल हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पीपल के ऊपर नीम का आपको पेड़ दिखता है. अब पीपल के ऊपर नीम दिखाई दे रहा है, तो जो नीम है वो सारा न्यूट्रिशन पीपल से गेन कर रहा है. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट्स. इन टेरिडोफाइट्स वी टेक एग्जाम्पल, दैट इज Selaginella ओरिगाना. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज़ के ऊपर ग्रो करता है और अपना सारा न्यूट्रिशन वहीं से गेन करता है. नाउ व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर आपको हर टाइम बारिश मिलती है, और वहाँ का अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वो होता है 60 mm. मतलब ऑलमोस्ट आपको हर टाइम वहाँ रेन ही रेन मिलेगी. सो वन पॉइंट इज देयर very important, 1 or 2 marks question is occurs from this point, that is recursion plants. Now what is recursion plants? Sometimes the plants which wants to avoid the xerophytic conditions or unfavorable conditions, they curl around and becomes a ball-like structure. And when the favorable conditions comes, they open up and become green and start to their normal growth. So these plants are known as recursion plants. जैसे कि हमने बात की थी ट्यूबर्स की. अगर एंथेसिरोज की बात करें, एंथेसिरोज में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी. वहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ की थी ट्यूबर. अब ट्यूबर क्या थी, जैसे ही उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही थी, सेल्स जो थी वो नोड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को ग्रो करती थी, और वो ट्यूबर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती थी ब्रस्ट कर जाती थी और एक वापस से नया प्लांट डेवलप करता था. सेम वही, द प्लांट्स कर्ल ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस लाइक ए बॉल, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में हो जाते हैं, एंड अगेन बिकम ग्रीन एंड फ्रेश व्हेन मॉइस्चर इज अवेलेबल. इन इंडिया
Out of 700 species in India, there are 71 species of Selaginella genus found in the India. Now we will talk about the sporophytic morphology. So sporophyte morphology, sporophyte की morphology में हमने बात की थी उसके स्टेम, लीव्स एंड रूट्स के बारे में. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी जब हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो स्पोरोफाइट है उसका हैबिटेट कैसा होता है. तो स्पोरोफाइट के हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली जो स्पीसीज होती हैं वो हर्बेशियस होती हैं और पेरेनियल होती हैं. द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मैनी साइकिल्स while some are annuals. They may be few to several meters. अगर हम उनकी लेंथ की बात करें तो 1 से मैनी मीटर्स उनकी लेंथ हो सकती है. Majority are dorsiventral and prostate. Now what is dorsiventral? मार्केंशा जो कि एक ब्रायोफाइट है उसमें हमने डोर्सीवेंट्रल बोला, मीन्स हम अपर और लोअर सरफेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सेम ऐसा ही जो आपकी स्पोरोफाइट है वो भी कैसा होगा, डोर्सीवेंट्रल, अपर एंड लोअर सरफेस विल बी डिस्टिंग्विश्ड. एंड प्रोस्टेट द क्रीपिंग मैनर इज देयर. Selagella divided into following two subgenera on the basis of the structure of sporophytic body, that is the homophylum and heterophyllum. As their name indicates, homo means same, phylum for the leaves which bears the same type of leaves are homophylum, and heterophyllum which bear different type of leaves are called heterophyllum. So take a look of the homophylum and heterophyllum plants. Firstly, homophylum जीनस की जो होम्योफाइलम जीनस है इंक्लूड करता है 50 स्पीसीज बिलोंगिंग टू दिस जीनस जनरली इरेक्ट एंड डाइकोटोमस ब्रांच स्टेम. इरेक्ट होगा इनका स्टेम जो आपके होम्योफाइलम है. मेन फीचर अगर हम बात करें डाइकोटोमस, इरेक्ट, प्रोस्टेट, सारी चीज़ें आपकी सेम वही हैं जो हमने अभी पीछे बात की थी. जनरल फीचर्स में जो मेन चीज़ आ जाती है वो आती है कि लीव्स के बारे में, isophyllous type of leaves are present and these are arranged in spiral manner. Example for Selaginella, Selaginodales, Selaginella oregana. Next is the heterophyllum. As their name indicates, hetero means different leaves. Dorsiventral symmetry, dorsal and ventral surface will be clearly distinguished, and by anisophyllum, different types, two types of leaves are there. So two types of leaves, the smaller one are the attached on the upper surface of stem, while the lower one are attached to the lateral side of the. So heterophyllum bears 4 rows of leaves. Out of 4 rows, 2 are smaller and 2 are larger. So the smaller leaves are attached on the upper surface of stem while the larger one are attached to the lower surface, attached to the lateral side of stem. जो स्मॉलर वाले रो होंगी, दो रो जो स्मॉलर लीव्स की होंगी वो स्टेम के, जैसे हमने मान लिया ये हमारा स्टेम है तो इसके अपर पोर्शन पे आपको स्मॉलर लीव्स मिलेंगी यहाँ पर आपको. वहीं जब हम बात कर रहे हैं लार्जर लीव्स की तो वो आपको इनके लेटरल साइड में मिलेंगी, इस साइड से. ओके. एग्जाम्पल फॉर Selaginella martensii, Selaginella crassuana, etc. Sporophytic plant body of Selaginella differentiated into root, stem and leaves. As I earlier stated that जब हम स्पोरोफाइट की मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसके स्टेम, रूट और लीव्स की बात करते हैं. Some species also have rhizophores. So the roots are adventitious. Now for this video it's enough. In our next video we will talk about the root, stem and leaves.
आई होप आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम.